Good morning, guys. Today is 25th of May. The time is 9:26, and we have taken the positions both in Nifty account as well as the Bank Nifty account. And we had to make one minor adjustment in the Bank Nifty account. We have to book the 35,100 straddle, which I had taken the first thing in the morning, and shift it to 35,000 straddle. So the quantities are 125, that is 5 lots, and on the Bank Nifty, on the Nifty account, the quantities are somewhere around 36 lots, 2700 quantities. So जब तक मार्केट ये रेजिस्टेंस को ऊपर से ब्रेच नहीं करता, दैट इज अप टिल 15300 इज नॉट टेकन आउट, नो एडजस्टमेंट नीड्स टू बी मेड टू दिस पोजीशन, एंड एट द सेम टाइम अप टिल द डेज लो इज ब्रीच्ड, डेज लो जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक ऑल्सो देयर इज नो एडजस्टमेंट दैट नीड्स टू बी मेड टू दिस पोजीशन. एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी जब तक बैंक निफ्टी 34,880 लेवल सीपीआर को ब्रीच नहीं करता है तब तक नो एडजस्टमेंट नीड्स टू बी मेड. इफ Bank Nifty starts breaching lower, and then I might have to completely come out of the position because the low ticks are very fast. काफी ज्यादा मतलब नीचे आ रही है, and Reliance is looking weak and HDFC is kind of sideways, not showing particular strength. So जब तक Bank Nifty look at this, जब तक Bank Nifty CPR को breach नहीं करता है और yesterday's close को breach नहीं करता तब तक we can hold on to this position. CPR जैसे breach कर देता है Bank Nifty and closes below CPR, then we might have to come out of the positions. But look at the premiums, man. 350 points triangle is just worth 45 rupees, less than 45 rupees. So the premiums are just trash. Definitely the incentive, the risk reward for playing the non-directional spreads have drastically gone down since the last 2 or 3 weeks, since the last 2 weeks in particular. But anyway, we have taken an extremely low risk triangle in terms of premiums काफी लो है, but even with that I've taken only 23 rupees 21 rupees का triangle. Okay, half of the 14 450 calls, not half, some 40% of the 14 450 calls have been shifted to 14 400 calls. That's only because these puts are not decaying the value, and suddenly if the low is breached, these puts are going to expand to quite some value. So because of which, to counter that, I have shifted some of the 14 450 calls to 14 400 calls. And in the Bank Nifty account, we have shifted from 35,000 to 34,900 yet again. That is because looks like the Bank Nifty is kind of halting after this big move. पहला एक कैंडल में बड़ा मूव था, and then it's halting, and if this gets taken out, then we can easily head to like 34,700 or something. So because of which I have shifted to 34,900. If you want to look at the open interest build up, अगर open interest, usually मैं open interest दिखाता नहीं हूँ, that there is a reason for it. Open interest should be taken only as a guideline, not as a hard and fast rule. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, there are so many people who have written these puts at 15,200, right? तो अगर market suddenly गिर जाता है, they'll unwind those options and they'll shift to a lower strike, or they do something else. तो हम लोग ऐसे बोल के हाँ 15,200 पे इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो 15,200 ब्रीच हो ही नहीं सकता, अगर ऐसे मान के आप बैठ जाओगे, एंड इफ द मार्केट कम्स टू 15,200 एंड इफ द मार्केट इज गोइंग बिलो 15,190 एंड यू आर स्टिल एक्सपेक्टिंग दैट द 15,200 विल होल्ड, सीन कैसा रहता है व्हेन द ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप इज सो हाई एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. Yes, a lot of those players will try to hold their positions, but once जैसे अपना कैपेसिटी से बाहर जाना शुरू हो जाता है, everyone will start unwinding at the same time. एक ही टाइम पे सारे लोग ये पुट्स अनवाइंड कर देते हैं एंड द पुट प्रीमियम्स विल शूट अप थ्रू द रूफ. तो वी डोंट वांट टू गेट स्टक इन दो सिनेरियोस. दैट्स व्हाई मैं ओपन इंटरेस्ट को मैं देखता हूं टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट्स, एंड इट शुड नेवर बी टेकन एज अ हार्ड एंड फास्ट रूल. ओपन इंटरेस्ट इज ऑल्सो अ लैगिंग इंडिकेटर. मतलब क्या बोल रहे हैं, हाँ देखो अभी मार्केट ऊपर जा रही है, करेक्ट, मार्केट इज हेडिंग हायर, दैट सो बिकॉज ऑफ दैट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ पुट पोजीशंस बिल्ट एट 15,200. अभी मार्केट नीचे आएगा, वो लोग पुट पोजीशंस जो सेल किए हैं वो लोग मतलब लेके अपने पोजीशंस लेके भागेंगे और कहीं और मतलब ओपन इंटरेस्ट बिल्ड करेंगे. सो इट शुड बी टेकन it should be definitely taken with a pinch of salt, but yes, 60-70% of the time it gives a good indication of where the market might head. But all right, एक मैंने छोटा सा डायरेक्शनल बेट लिया है, that is 15,200 पुट को मैंने शॉर्ट किया है, जस्ट 150 क्वांटिटीज, दैट टू विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. 55.4 रुपीज पे मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे. वाई 55.5 रुपीज? जब ये लो को तोड़ता है ना, जब निफ्टी अगर लो को तोड़ देता है, देन माई स्टॉप लॉस विल बी 55.5. दैट इज हाउ मच?
I've given around 7 point stop loss, that is 1,000 rupees risk, that's it. तो उतने के साथ में अभी एक एक्स्ट्रा पुट शॉर्ट किया है, so that will not only compensate for the spiking calls but also I've taken some amount of a directional risk. Usually मैं directional लेता नहीं हूँ, but today I've taken because it offers me a good risk reward. अगर मार्केट मान लो कि एक 30 पॉइंट भी ऊपर चला जाता है, like I get like 1:1, more than 1:1, so I at that point I can do some other changes or I can come out of the position altogether. Alright guys, the time is 11:50. We have completely pulled out of all our positions. सारे positions से बाहर आ गए हैं. I could have adjusted, but this down move looked like we might head up till CPR, but yeah, we found support at this point. And alright guys, so मैंने intraday का सारे positions close किया था. Alright, I didn't find the risk reward to be that attractive to hold on to those intraday trades, but I have taken a positional trade. निफ्टी अकाउंट में बैंक निफ्टी का पोजीशंस लिया है बिकॉज इट इज पोजिशनल. तो 10 लॉट का मैंने 35,000 स्ट्रैडल बनाया है. आई विल शो यू हाउ इट लुक्स. सो आई हैव शॉर्टेड द 35,000 कॉल 24th June and 35,000 put, same expiry, and then I have taken a 33,000 put and a 37,000 call. So this gives a break even. All right, this gives a break even up till 33,600 and 36,400. 36,400 is somewhere here, and 33,600 कहाँ पे? 33,600 is somewhere here. ठीक है. So मुझे ये रेंज मिलती है पूरे महीने के लिए. I get this range. This is the range. अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से where are the supports and resistances? So the first thing is exactly यहाँ पे आपको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, राइट? कितने रेजिस्टेंस मिल रहा है? Look at this. 1, 2, फिर से 3, फिर से 4. So 36,500 which is our break even is a very good resistance. मुझे नहीं लगता कि इतना easily 36,500 पार कर देता है. Now what is the support? Where is the support? Support obviously clearly यहाँ पे ये जो लाइन थी यहाँ पे it was acting as a resistance. Sorry, it was acting as a resistance. कैसा था? First time, second time, third time, fourth time, and अभी fifth time ये breakout दे दिया, right? So fifth time we have got a breakout to the upside. So definitely this will act as a good amount of support. कहाँ पे है वो? It is at a 34,000 level. Round number भी है. So जैसे 34,000 breach होगा, then we might look at either coming out of the positions or doing something. Okay? जब वो breach होगा तब. So 34 breach होता है, then what we're gonna do is we are going to either short additional calls. Additional calls इस तरफ का additional calls हम short कर सकते हैं, या we can shift the straddle itself to another 500 points lower. 34,500 पे हम straddle को shift करके बैठ सकते हैं. So we have two options. MTM fluctuations काफी ज्यादा रहता है, like just 10 seconds before we were looking at around 7k and now it's 1k and again it's 3k. So MTM fluctuations के बारे में टेंशन ना लो. It's very common in the positional options, especially when we are trading with anything more than 5 or 6 lots. Used margin सिर्फ 4.6 lakhs दिखा रहा है. I'm not sure if this is the correct interpretation, but यहाँ पे Opstra पे I need 9.3 lakhs बोल रहा है, but 9.3 lakhs में almost 3 lakhs का हमें क्रेडिट मिलती है. So because of which it is showing that the margin block is only 5 lakhs. But देखेंगे कल तक एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी इसके लिए. So that is the end of my trading day. ये positional trades हम देखेंगे कैसे manage करना है. What is the maximum gain? Even the risk reward wise, this is a very good trade. So we made around 11k for the day, 11 or 12k for the day in the intraday account. And what you're looking at here and what you're looking at this is just, it's because of this. It's because of the MTM fluctuations. It's because of this positional MTM fluctuations. We are looking at a minor drawdown because of the slippage while entering the trades. I'll see you guys tomorrow.